Hello दोस्तों, you all are aware that CBSE has released the sample papers for term 2. CBSE ने अभी कुछ दिन पहले ही term 2 के sample papers release किए हैं. And today we'll do the analysis of the sample paper issued by the boards. I am Sunil Sharma, faculty of English at Resonance. तो चलो चलते हैं sample paper पर. And today we'll analyze the sample paper of English Core Term 2 for the year 2021-22. अधिकतर बच्चों ने sample paper देख लिया होगा. For those students who did not get time to go through the sample paper or did not take pains to go through the sample paper, ये सोचकर कि अभी तो बहुत समय बचा है एग्जाम के लिए, तो सभी के लिए सैंपल पेपर आपके लिए. तो पहले हम सैंपल पेपर देखते हैं, देन विल डू द एनालिसिस ऑफ दैट पेपर. यू ऑल नो दैट देयर आर 3 sections in term 2. The question paper contains all the 3 sections, that is the reading section, the writing section and the literature section. And after every question कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन में से कितने हमको अटेम्प्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन ए, कंप्राइजेज ऑफ द रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन के अंदर 2 पैसेजेस आपको दिए जाएंगे. 2 क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस, एंड इसका जो वेटेज है दैट इज 14 मार्क्स. द फर्स्ट पैसेज का वेटेज है 8 मार्क्स एंड द सेकंड पैसेज है द फैक्चुअल बेस्ड पैसेज, दैट इज 6 मार्क्स का. सो ये पैसेज है सैंपल पेपर में जो आपको दिया हुआ है. तो वेरी क्विकली यू कैन गो थ्रू द सैंपल पेपर. स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज कि ये नंबर्स क्या है. ये जो नंबर्स है यहाँ पे, दीज आर द लाइन नंबर्स. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ लाइन है. 6, 7, 8, 9, 10th, तो ये 10th लाइन है एंड सो ऑन. सो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नंबर दिए हुए हैं यहाँ से. ये क्वेश्चन नंबर है, दीज आर द लाइन नंबर्स. बिकॉज जैसे आप पेपर देखोगे आगे जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड दैट फ्रॉम लाइन दिस टू दिस, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है. तो इसीलिए फॉर क्विक रेफरेंस द थिंग्स हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर द स्टूडेंट्स. क्लियर? So this is the thing. पूरा पैसेज है ये. We'll go through the passage very quickly. Yes. So यहाँ तक का ये पैसेज था. पैसेज इतना इजी भी नहीं है, एंड जो क्वेश्चंस भी जो उसके बाद में दिए हैं दे आर नॉट सो इजी कि आपको आंसर्स यू विल गेट इट आराम से. आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा. आई डोंट से इट इज अ डिफिकल्ट पैसेज, बट इट इज नॉट a very easy passage also. So read the passage, understand the passage, reread the passage, और then you will be able to analyze the answers. और क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए. टर्म 1 में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी, एंड अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाओगे, यू गो अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, यू मे फेस प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द questions based on passage number 1. So total 9 questions are given and you have to attempt any 8 out of them 1 mark each. So अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. See, this is what I was talking about. State any one trait of the writer that is evident from lines 5 to 10. So you don't have to read the passage completely. वापिस again दोबारा. Once you understood the passage, so आपको 5 और 10 जो लाइन है उसके बेस पे यू टू गिव दिस पर्टिकुलर आंसर. ऐसे ही सम मोर क्वेश्चंस आल्सो यू विल फाइंड. सो आई होप दिस इज क्लियर विथ माय फ्रेंड्स. विल मूव ऑन. देखो सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड फ्रॉम लाइंस 10 to 20, फ्रॉम लाइंस 15 to 25. So this is the reference which they have given you in the question paper. So उसी के हिसाब से आपको आंसर एनालाइज करना है. Then fill in the blank है, it's not that difficult a answer.
So read the passage, read the questions carefully and then start attempting nicely. आराम से आपको full marks इसके अंदर मिल जाएंगे and out of 9 you have to attempt any 8 questions. So ये था रीडिंग सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज. चलते हैं दूसरे पैसेज पे, द फैक्चुअल बेस्ड पैसेज which has a graph, a table along with it. So read the passage below. Yes, the passage has been given to you. Again the line numbers 5, 10, 15 and so on. A chart उसके अंदर दिया हुआ है. A sample percentage of the food consumption pattern is displayed and इसके बेस पे also question are put up. So you have to read and understand this chart also जब आप answer attempt करोगे. Now we'll move on to the questions based on this passage. In this 7 questions are asked. You have to attempt any 6, 1 mark each. So out of these 7 questions, there are 2 questions which are for the visually impaired candidates. Question number 3 है, yes, one for all the students and the other one जो नीचे है that is for the visually impaired students. And this question you don't have, not everybody has to attempt. Only the visually impaired candidates will attempt that question. So question number 3 for visually impaired और एक और question है question number 4. This also is for the visually impaired candidates. Rest all the other questions are for all the students who are appearing for the CBSE Term 2 for 2021-22. So इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं in your reading section. So the passages are not that easy and they are not difficult also. Moderate level के पैसेज यहाँ पे आपको क्वेश्चन से सैम्पल पेपर में दिए गए हैं. Moving on to your section B, that is your writing section. This is of 8 marks. Short answer type question and the long answer type question. Question number 3 is the short answer type question and only one topic is there in your syllabus, invitation and the replies. No option has been given in question number 3. So compulsory question है and इसके अंदर the question put up is the reply to the invitation. Question number 4. In this question number 3, the word limit is around 50 words only. Long composition में, that is question number 4, you have been given 2 questions and you have to attempt any one of them. So it will be a relaxation moment for most of the students. आपको 2 type of questions है long answer में. One is job application letter and the another is report. So एक job application letter का question है, not a direct one, an advertisement has been given and based on that you have to put up the solution. So ये question था इसका, आपने advertisement पढ़ी थी और उसके बेस पे you have to give the reply and किस हिसाब से what was the advertisement? Advertisement आपके सामने है. So based on this advertisement you have to give the reply. So the first question is job application letter and option B में उसके संग is report writing. Report also have 2 types in the syllabus, magazine report and the newspaper report. और ये report आपके लिए ये आई थी. So you have to attempt any one. So in long answer type questions you have option, you have choice, but in short compositions you don't have any option, it is a compulsory question. Long composition में the word limit is around 120 to 150 words. So this was something related to your section B. Moving on to your section C, that is your literature. Literature weightage is 18 marks. And 2 type of questions are there, short answer type as well as long answer type. So question number 5 is short answer type question, जिसकी word limit है 30 to 40, तो around 40 words. And see the choice you have got, you have to attempt any 5 out of the 6 questions put up to you. And अगर आप question ध्यान से देखोगे, the questions from all the topics, that is the prose chapters from Flamingo, the poems from Flamingo and the prose chapters from Vistas, सब chapters के questions इसके अंदर
पूछे गए हैं। सो दिस इज ये क्वेश्चन आपको पता होगा फ्रॉम द चैप्टर रेड ट्रैप, फ्लेमिंगो का चैप्टर. दिस इज राजकुमार शुक्ला is a question from the chapter Indigo, again from Flamingo, textual chapter. Next, Adrian Rich ने कौन सी पोएम लिखी थी? Aunt Jennifer's Tiger. So एक क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है from the poem. And from 6 you have to attempt any 5 of them. Moving on quickly with the other questions. This question is again from the second poem. आपको 2 poems है syllabus के अंदर, and the second question is from the question number 4 is from the second poem A Thing of Beauty. Now these 2 questions are from Vistas. On the face of it, ये chapter का नाम आपको दिया हुआ है, and this question is from Should Wizard Hit Mommy? So questions from everywhere have been put up. So don't go predetermined that or don't go for any permutation and combinations कि मैं ये chapter करता हूँ, ये chapter नहीं करता हूँ, and so on. Everything has been put up in the sample papers, either in the form of short answer type questions or in the form of long answer type questions. So आप देखोगे short answer type questions के अंदर एक chapter में से question नहीं पूछा गया है, that is from Vista का chapter है Evans Tries an O Level. But that question has been put up in the form of long answer type questions. So हर चीज में से आपको questions पूछे गए हैं. They have not left any stone unturned. Now this is your long answer type question, or you have to attempt any 2 and see the word limit. 3 questions दिए हुए हैं and you have to attempt any 2 of them. First long question आपको दिया है एक poem में से. So poem के अंदर you got 2 short answer type questions, 2 to 4 marks, and यहाँ पे एक 4 marks का. So the weightage of poem, I'm talking inclusive of the options, is 8 marks. Now Colin Dexter, ये question जो missing था, short answer type question में से इस chapter का question नहीं पूछा गया था, and this chapter has been covered in the form of long answer type questions. And one more question has been again put up from the chapter Indigo. So this is the way the things have been put up, the bifurcation has been done, and सब चीज को equal importance दिया हुआ है. Flamingo prose, the weightage, you just go through the questions carefully. The weightage for Flamingo prose chapter is 8 marks. Flamingo की जो poems है, the weightage comes out to be 8 marks, and the textual chapters of Vistas, the weightage of those chapters is also 8 marks. So this is the way the things have been put up for you. And if you just read the questions, those who are reading these questions for the first time शायद दो पहली बार ये sample paper के questions देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या है, what type of questions has been put up. So no questions directly have been taken from the NCERT. The questions are based on the understanding of that particular chapter by the student. आप कितने ढंग से उस chapter को समझे हैं, उसी के हिसाब से you will be able to give the answer. Yes. So understand the chapters carefully, because answering such type of questions is not very easy. इतना आसान हर बच्चों के लिए नहीं रहेगा, है ना. जैसे आप ये क्वेश्चन देख लो, biographies include features of non-fiction text, factual information, different text structures such as description, sequence, comparison, cause and effect, or problem and solution. Examine Indigo in the light of this statement in about 120 to 150 words. So see how they have to state the question. If you understand the question properly, the answers are not at all difficult. तो ये है हमारे type of question जो आपको पूछे गए. So whatever paper has been put up to you, उसका analysis at one glance. Yes. शायद ये screen आपको visible ना होवे ढंग से. So section wise I have just made the other slides, और हम उसको इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं. It will be easier for you to understand.
सो अब हम फाइनल एनालिसिस करते हैं हमारे इंग्लिश कोर के सैम्पल पेपर का issued by the board for term 2 2021-22. In reading section, 2 questions, unseen passage. First में से from 9 you have to attempt any 8 questions. Yes, from 9 you have to attempt any 8. 1 mark each, तो ये उसका weightage है 8 marks, and this is a literary passage over here. The second passage from writing section. From 6-7 questions you have to attempt any 6. तो दोनों में ऑप्शन दिया है आपको, and all the questions are subjective. No MCQ based questions are put up. कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है पूरे पेपर के अंदर, अनलाइक योर टर्म 1. एंड 1 मार्क ईच, एंड दिस इज अ फैक्चुअल पैसेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ दैट चार्ट. सो क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन इज ऑफ 14 मार्क्स, 8 + 6 14 मार्क्स का इसका वेटेज है. 2 अनसीन पैसेजेस, 1 लिटरेरी बेस्ड एंड 1 इज द फैक्चुअल पैसेज. मूविंग ऑन टू योर सेक्शन बी. सेक्शन बी के अंदर हमारे शॉर्ट कॉम्पोजिशन भी है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में है. सो सेक्शन बी क्या, द फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नो ऑप्शन, यू हैव ओनली 1 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट 1. कोई चॉइस आपको उसके अंदर नहीं दी गई है, एंड द वेटेज इज 3 मार्क. एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज पुट अप? द क्वेश्चन पुट अप टू यू इज रिप्लाई टू द इन्विटेशन. ये क्वेश्चन दिया था बोर्ड द्वारा इशू किए हुए सैंपल पेपर के अंदर. चलते हैं सेक्शन बी के लॉन्ग कॉम्पोजिशन के अंदर, जहाँ पे यू हैव 2 टॉपिक्स, जॉब एप्लीकेशन लेटर एज वेल एज रिपोर्ट राइटिंग. सो ये था 2 क्वेश्चंस दिए आपको, एक जॉब एप्लीकेशन था, अनदर रिपोर्ट राइटिंग थी. एंड फ्रॉम 2 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1, एंड द वेटेज फॉर दिस इज 5 मार्क्स. 5 मार्क का ये क्वेश्चन है विथ वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स. एंड बोथ क्वेश्चंस आर पुट अप एज ऑप्शन. One was job application, the another is report writing. So whatever topics are there in your syllabus, all the topics have been covered very handsomely. So you can't take a choice कि मैं ये topic नहीं करता हूँ, ये शायद ना पूछे. Please be prepared for each and every topic. तो section B का ये रहा part. Moving on to the section C. Literature based. 2 types of questions are put up. One is the short answer type question जिसकी word limit है around 40 words, and the other type is the long answer type question जिसकी word limit है 120 to 150 words. So in literature, short answer type question जिसकी limit है 40 words की, from 6 questions you have a choice, you have to attempt any 5. 2 marks each comes to 10 marks for the short answer type questions. And see the questions that have been put up. Red Trap, Indigo, the textual chapters या prose chapters, 4 marks का weightage यहाँ पे आप देख सकते हो. Flamingo की poems, 2 poem आपके syllabus में, both have been put up, 4 marks weightage over here. And Vistas, prose chapters, you have 3, 2 में से पूछेगा यहाँ पे, and the weightage over here becomes 4 marks. So 4 marks for prose Flamingo, 4 marks for poem Flamingo, and 4 marks for the chapters from Vistas. तो शॉर्ट आंसर में 4 मार्क्स के ब्रेकअप में आपको दिए हैं. हर चैप्टर को कवर किया है एक्सेप्ट 1 जिसको दे हैव टेकन अप इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. Yes, so this is the thing you should keep in mind. And in your final exam, you can expect the same pattern which has been issued by the board sample paper. And the last thing है उसके लिए long answer type question 150 words की है. From 3 you have to attempt any 2. 4 marks each, 8 marks का ये weightage है. And Flamingo prose, Flamingo poem and Vistas जो भी 3 टाइप के हैं सबसे ले लिए हैं and 4 marks each. So Flamingo prose का weightage becomes 4 plus 4 marks short answer type question के 8 marks. Similarly poem के भी 8 marks हो जाता है weightage and
विस्टास के जो चैप्टर्स है उसका भी वेटेज बिकम्स 8 marks. So this is how the things have been put up. Total 28 questions are put up and you have to attempt only 23. और choices कहाँ कहाँ मिले आपको? दोनों अनसीन पैसेज में आपको ऑप्शन मिल गए हैं, प्लस one option you got in the long composition, letter or report, and one option you got in short answer type question, and one more option you got it is the long answer type question. So total 28 are put up and आपको इसमें से 23 questions attempt करने हैं. So friends, prepare accordingly. Don't take things for granted. अच्छे से तैयारी करो. Gear up yourself. Prepare seriously, and you'll always come out in flying colors. I am sure about it. And English में स्कोर करना will not be difficult अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के, सीरियसली प्लान्ड वे में उस चीज को पढ़ो और समझो. So the final analysis, जो whatever I have just said, I'll just summarize in short. No extract based questions were asked. Most of the time extract based question पूछते हैं poems के अंदर, but इस बार sample paper के अंदर no extract based questions either from the textual chapter or from the poems पूछे गए हैं. The second thing what we can analyze यहाँ पर यह हर एक चैप्टर को कवर किया हुआ है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है which they have left uncovered. All the topics have been covered properly. Next, in short composition, invitation or the replies, they have not given any option to the students. It becomes a compulsory question. So don't expect that if I go for invitation, I leave the reply to the invitation or vice versa. कि invitation के replies को मैं तैयारी करके जाता हूँ, invitation बनाना मैं नहीं पढ़ता हूँ. प्लीज ऐसा मत सोचना. Yes, you may be trapped. आप उस जाल में फंस सकते हो बिकॉज कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आपको. एंड जो फोर कंप्लीट पेपर if you just analyze textual chapters, the Flamingo poems 8 marks, the Flamingo prose 8 marks and the Vista prose 8 marks. सबको उतना ही सम्मान दिया है equally. So this is what the things have been analyzed. And one more thing we can add is no MCQs are there anywhere. कोई भी MCQ based question neither in the passage nor in your literary writing section or the literature part. कहीं पे भी आपको MCQ based question नहीं है. So friends, enjoy learning, plan accordingly and अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करिए. And the videos of the other subjects, उनके analysis will be uploaded very soon on this site. So till then, have a nice time, enjoy your learning and thank you all.